Hello everyone, welcome to Global Online. In this lecture, we are going to see NTA UGC NET Paper 1, and in this lecture, we are going to discuss 50 most expected MCQ on Research Aptitude Unit. Students, we are having very less time in our hand, that is hardly 10 to 12 days, and this is a complete revision on this unit. This will help you to clear all your doubt about the Research Aptitude Unit, and you will receive my lecture every day at 2. So do visit our channel every day at 2 and do watch my lecture to score more marks in the upcoming exam. लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ जो पेपर 1 होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ही स्कोरिंग होता है और आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी सी हो जाए, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 2000 प्लस MCQ क्विक रिवीजन PDF, जिसमें आपको मिलते हैं करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने यहाँ पर ऐड किए हैं जिसका सॉल्यूशन जो होता है वो हमने डिटेल में दिया है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर ऐड किए हैं, प्लस जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है वो भी हमने यहाँ पर ऐड किए हैं, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी सी हो जाए। अगर किसी ने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट भी नहीं की है पेपर 1 के लिए, तो भी ये जो PDF है वो बहुत ही हेल्प करेगा उस स्टूडेंट को पेपर 1 क्लियर करने के लिए। तो ये PDF लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें और इसकी जो फीस है वो जस्ट 599 है। स्टूडेंट, हमने यहाँ पर जो गारंटेड क्वेश्चंस है वो यहाँ पर डाले हैं, तो आप इसे जल्दी से ज्वाइन करें। Which of the following is a non-probability sampling method? यहाँ पर आपको पूछा गया है दिए में से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है, और ये जो क्वेश्चन है वो 2013 में पूछा गया था। इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये जो है वो सबसेट है ऑफ अ स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन इन विच ईच मेंबर ऑफ द सबसेट हैज अ इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग चूजन. A simple random sample is a mean to be an unbiased representation of a group. Second option is stratified sampling. Stratified sampling is a sampling technique है जो कि use की जाती है to obtain the sample that best represent the population. And it reduces the bias in selecting the sample by dividing the population into the homogeneous subgroup called a strata and randomly sampling data from each stratum. Then is cluster sampling. Cluster sampling is a technique in which the cluster of a participant that represent the population are identified and included in the sample. And last one is quota sampling. Now what is quota sampling? कोटा सैम्पलिंग जो है वो एक टाइप है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, वेयर द रिसर्चर विल फ्रॉम द sample of the individual who are a representative of a larger population. Non-probability sampling means that researchers choose the sample as opposed to the randomly selected it. So not all the members of a population have an equal chance of participating in the study. So according to explanation, जो correct answer होगा यहाँ पर वो होगा option number D. That is quota sampling is a non-probability sampling method. सैम्पलिंग एरर डिक्रीजेस विथ, ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आया था। इन 2013 में ये पूछा गया था, जहां पर आपको सैम्पलिंग एरर के बारे में पूछा गया था। ये डिक्रीज होते हैं विद द, इसके लिए आपको फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है डिक्रीज इन सैंपल साइज, सेकेंड ऑप्शन इज इंक्रीज इन सैंपल साइज, थर्ड ऑप्शन है प्रोसेस ऑफ रैंडमाइजेशन, एंड लास्ट ऑप्शन है प्रोसेस ऑफ एनालिसिस. The relation between the margin of error and a sample size is inverse. ये जो relation होता है वो inverse होता है, opposite होता है. That is, when the sample size increases, the sampling error decreases. Okay? जब भी जो sample size होगा वो increase होगा, तब sample error होगा वो decrease होगा. This is because the more information you have, the more accurate the result will be. Right? मतलब कि जो correct answer होगा वो होगा option number B. Sampling error decreases with the increase in the sample size. The principle of fundamental research are used in. ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आया था, जहां पर आपको पूछा गया था जो प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च होते हैं वो यूज्ड होते हैं इन, इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है एक्शन रिसर्च,
एक्शन रिसर्च की अगर हम बात करें तो एक्शन रिसर्च इज अ philosophy and a methodology of a research generally applied in the social science. It seeks the transformative change to the stimulus process of taking action and doing a research which are linked together by a critical reflection. उसके बाद है applied research. Applied research is a research methodology conducted by the researcher to recognize any problem or develop any research using the experimental method for a practical application. It is examined as a non-systematic inquiry because it directly approaches to find a solution of any problem. Third option is philosophical research. Philosophical research is a clarify meaning, many value magnified, identify the ethics and study the nature of the knowledge. And last one is historical research. Historical research is qualitative technique. Historical research study the meaning of a past event in an attempt to interpret the fact and explain the causes of the event and the effect in the present event. ये जो है वो हिस्ट्री की बात करता है. ओके, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अप्लाइड रिसर्च. Here the question is which of the following sampling method is based on the probability. ये जो क्वेश्चन है वो 2012 में आया था जहां पर आपको सैम्पलिंग मेथड के बारे में पूछा गया था जो कि बेस्ड है प्रोबेबिलिटी पर, जिसमें कि फर्स्ट ऑप्शन है कन्विंसिंग सैम्पलिंग. कन्विंसिंग सैम्पलिंग जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है वेयर द सैंपल आर सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन ओनली बिकॉज दे आर कन्वीनियंटली अवेलेबल टू द रिसर्चर. मतलब कि जो सैंपल होता है वो इजीली अवेलेबल होता है रिसर्च करने के लिए, एंड दिस सैंपल आर सिलेक्टेड ओनली बिकॉज दिस आर easy to get and researcher did not consider selecting the sample that represent the entire population. Second option is quota sampling. Hypothetically consider the researcher want to study the career goal of a male and a female employee in the organization. If supposing there are 5,000 employees in the organization and these 5,000 employees are known as an entire population. In order to understand better about the population, researcher will need only a sample, not the entire population. Okay. Then is judgment sampling. Judgment sampling, the sample are selected based purely on the researcher knowledge and creditability. In other words, researcher choose only those he feel are right to fit, okay, to participate in the research study according to the researcher judgment. जितनी उसकी knowledge है, credibility है, according to that knowledge he will select the sample from the population. And last one is stratified sampling. In a stratified sampling method, the total population is divided into the smaller group to the complete sampling process. The small group is a force based on the few characteristics in the population, and after separating the population into the smaller group, the stratifier randomly select the sample. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. अ वर्किंग हाइपोथेसिस इज, ये जो क्वेश्चन है वो हाइपोथेसिस के ऊपर है जो कि 2013 के क्वेश्चन पेपर में आया था जहां पर आपको ये पूछा गया था. ओके, और इसके लिए आपको ऑप्शंस दिए गए थे जिसमें कि फर्स्ट ऑप्शन था अ प्रूवन हाइपोथेसिस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट. सेकेंड ऑप्शन था नॉट रिक्वायर्ड टू बी टेस्टेड. थर्ड ऑप्शन था a provisionally accepted hypothesis for a further research, and last option था a scientific theory. A working hypothesis is a hypothesis that is a provisionally accepted as a basis for a further ongoing research in a hope that tenable theory will be produced even if the hypothesis ultimately fail. Okay. Unlike all the other hypotheses, the working hypothesis is constructed as a statement of our expectation which can be linked to the deductive exploratory research in an empirical investigation and often used as a conceptual framework in a quantitative research. The term working indicates that the hypothesis is a subject to the change.
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अ वर्किंग हाइपोथेसिस इज अ प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस फॉर अ फर्दर रिसर्च। Which of the following is a not a type of experimental method? ये जो क्वेश्चन है वो 2013 में आया था, जहां पर आपको पूछा गया था गिवन में से कौन सा एक है जो एक्सपेरिमेंटल मेथड का टाइप नहीं है। फॉर दिस द फर्स्ट ऑप्शन गिवन इज सिंगल ग्रुप एक्सपेरिमेंट। First of all, what is experimental method? Then an experimental method is an investigation in which the hypothesis is scientifically tested. In the experiment, the individual variable is manipulated and the dependent variable is measured and extraneous variable are controlled. The first option is single group experiment. The concept of a single group experiment research designed to test a null hypothesis. Okay, ये जो है वो concept आया था to design the null hypothesis that there are no significant difference between the achievement of the people under the experimental treatment and the achievement that are a previous rate of a progress. Then is residential group experiment. Residential are a estimated of an experimental error obtained by subtracting the observed responses from the predicted responses. The predicted responses is calculated from the chosen model after all the unknown model parameters have been estimated from the experimental data. Then is parallel group experiment. This type of a experiment design consists of a 3 or a more group wherein a one group is a control group with a 2 or a more experimental group. And the last one is rational group experiment. Rational group is an experiment that is carried out logically in an ideal setting. A setting that we may only be able to create a theoretically. The rational experiment can allow the experiment to be set up on the drawing board, so to speak, before we actually perform. Here the correct answer for this question will be option number B. Which of the following is a non-parametric test? ये जो क्वेश्चन है वो 2013 में आया था, जहां पर आपको पूछा गया था दिए गए में से कौन सा एक है जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं है। ओके और इसके लिए आपको ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन था टी टेस्ट। अगर हम बात करें टी टेस्ट की तो ये एक स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट इन विच द टेस्ट statistic follow a student t distribution under the null hypothesis. Then is sign test. A sign test is a non-parametric test which make a very few assumptions about the nature of a distribution under the test. This means that it is a very general applicability but not may lack the statistical power of a alternative test. Then is chi-square test. Chi-square test is a statistical procedure for determining the difference between observed and expected data. This test can also be used to determine whether it is correlated to the character variable in our data. Okay, here we are finding the correlation between the two variables. That is run test. Run test is a statistical test used to determine if the data obtained from the sample is random. That is why it is called a run test. For a randomness of a data is determined based on the number and the nature of a run present in the data of the interest. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टी टेस्ट इज नॉट अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. Deconstruction is a popular method of research in. ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आया था, जहां पर आपको डिकंस्ट्रक्शन जो है वो पॉपुलर मेथड है रिसर्च की, इन विच रिसर्च ऐसा पूछा गया था. इसके लिए आपको ऑप्शंस भी दिए गए थे, लेकिन बिफोर गोइंग टू द ऑप्शन वी विल सी व्हाट इज अ डिकंस्ट्रक्शन. Deconstruction may be seen in a means of understand a relationship between the text and the meaning, institution and the nature. It stands from the literary and philosophical analysis that has been derived from the work of the post-structuralist philosopher. Okay, उसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है बेसिक साइंस. Basic science research lead to the scientific discovery, the process or a product of a successful scientific inquiry.
It includes the scientific activity from observation to the laboratory experiment and data mining. उसके बाद है applied science. Applied research is a practical application of the science. It accessible and uses the accumulated theory, knowledge, method, and technique for a scientific, state business, or a client-derived purpose. The applied research is constructed with a pure research in the discussion about a research ideal, methodological program, and a project. Third option is social science. Social science research work to answer many of the questions we have about the human behavior. Through the scientific study, social science research seeks to understand the how and why the human behavior. Method social science researchers follow the 5 steps of a scientific method to conduct the research. And last one is literature. Literature research refers to the scholarly critical study of the literature, generally for the analysis purpose. Okay. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कंस्ट्रक्शन इज द पॉपुलर मेथड ऑफ अ रिसर्च इन लिटरेचर. Which of the following is the most important purpose of carrying out a research in education? In a given question, they asked you, following which of the option will be the most purpose for carrying out a research in education field? What is research? Research means researching or searching again. Is a way of looking for the new information, new understanding or the new fact. जो भी ये रिसर्च करता है उसे हम रिसर्चर कहते हैं. रिसर्चर is often used for solving the problem or increasing available knowledge. For this question, the options are to improve the status of institution, to improve the chance of promotion, for individual personal growth, and for increasing the social prestige. जो प्राइमरी पर्पस है एजुकेशन रिसर्च का is to expand the existing body of knowledge by providing solution to the different problem in pedagogy while improving the teaching and learning practice. Here the correct answer for this question will be option number C. The most important purpose of carrying out the research in education for an individual personal growth. Personal growth in sense like a building a new knowledge, learning new skills, etc. Which of the following is the first step in starting the research process? In a question they ask you, कोई भी research start करने के लिए first step क्या होती है? And the options are searching source of information to locate problem, survey of related literature, identification of problem, searching for solution of problem. Here the research is searching again. Research is a way of looking for a new information, new understanding and the new fact. The process which involved in the research is identification of the research problem will come first. Then will be the formulation of hypothesis. The third step in the research process is review of related literature. Fourth will be preparation of research design. Then will be actual experimentation. Then will be research and discussion, and the last step is formation of conclusion and a recommendation. So here the correct answer for this question will be option number C. Identification of problem is the first step in the research process. Which of the following are the quality of good researcher? Given which one is the quality of good researcher? Good researcher जो होता है वो ओपन माइंडेड होना चाहिए एंड मस्ट बी अडॉप्ट अ क्रिटिकल वे ऑफ अ थिंकिंग. उसके साथ ही वो हार्ड वर्किंग और फोकस भी होना चाहिए एंड टू डिनोट हिज अ स्पेसिफिक फील्ड इंटरेस्ट. फॉर दिस क्वेश्चन द गिवन ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन इज pick up vast area and try to understand a minute detail. Second option is pick up a specific area and try to understand its a basic detail. Pick up vast area and try to understand its a basic detail. Pick up specific area and try to understand in minute details. The correct answer for this question is option number D. Pick up specific area and try to understand a minute detail is a quality of good researcher.
The depth of the research can be judged by, in a question they ask you, how the depth of the research can be judged. And the options are title of the research. No, the depth of the research cannot be judged by the title of the research. Then is a total expenditure on the research. This will be also not the correct. Then is the duration of the research. And last is the objective of the research. The depth of the research use refer to both the purpose and the practice of the research use, the complex way in which evidence use is the meaningful, systematic and likely to generate improvement in the policy and practice. Here the correct answer for this question will be option number B. Objective of the research can help to judge the depth of the research because the objective shows the overall idea of the research. In descriptive testing, which is the best method of research? In given question they ask you, in descriptive testing, which of the following will be the best method of research? What is a descriptive testing? Descriptive testing जो है वो objective analysis का form है which involve applying a test to break down the particular material to determine its physical property. For example, automobile crash tests are well known for the descriptive testing. The options given are research survey. सर्वे रिसर्च में रिसर्चर research conduct करता है with the help of a survey method in which he collect the data from the respondent. Then is sampling. Sampling is selecting the data from the whole population and studying according to that sample. Then is random enumeration. Enumeration is a complete order listing of all the item in the collection. एनुमरेशन जो है वो टर्म कॉमनली यूज होता है मैथमेटिक्स में और कंप्यूटर साइंस में टू रिफर अ लिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दिस. For this question the most appropriate answer will be option number B, sampling. Participant observation is getting yourself completely involved in the study of. In this question, they ask you about the participant observation or what is participant observation. To answer this question, you have to first understand what is participant observation. Participant observation ये एक research का method है which involve getting to know the people or a culture of those who are being observed. The example of participant observation. In this a form of participant observation which include the study where the researcher live for a long period of a time among a different culture or a religious communities. The options given for this question are method, procedures, organizer and people. Just now I told you about the participant observation or a meaning of participant observation. According to that, for this question, the option D will be most appropriate or most suitable answer. Interrogative, declarative and directional are a type of. In a given question, they given you three options and they ask you, they are the type of, and the options given are synopsis. The meaning of synopsis is the summary or a general survey of the something. That means it is a brief summary of the research. The second option is research. Research means a searching again or a researching. Is a way of looking for a new information, new understanding or the new fact. Third option is hypothesis. Hypothesis is a proposed explanation for the phenomena. And the last option is none of the above. Here the correct answer for this question is option number C. Interrogative, declarative and directional are a type of hypothesis. Which approach of research deal with the long term researcher? नीचे दिए में से कौन सा रिसर्च अप्रोच डील करता है लॉन्ग टर्म रिसर्च में? एंड द ऑप्शंस आर horizontal. The horizontal approach, according to the text, this approach seeks to tackle the overall health problem on the wide front and on a long-term basis through the creation of a system of permanent institutions commonly known as general health services. Then is a lateral thinking. Lateral thinking is a manner of solving problem using an indirect and a creative approach by reasoning that is not immediately obvious. And then is a longitudinal approach. ये ऑब्जर्वेशनल रिसर्च मेथड है.
in which data is gathered from the some subject repeatedly over a period of time. For example, a 5-year study the children learning to read will be the cohort longitudinal study in which researcher might compare the environment and other factor in the children and measures outcome over a time. And the last option is none of the above. Here the correct answer for this question will be option number B. A researcher should be researcher कैसा होना चाहिए and the options are dependent on the teacher, fairly knowledgeable, open-minded and none of this. Researcher is a person who is doing research. जब भी रिसर्च करता है ओपन माइंडेड होना चाहिए एंड मस्ट ऑल्सो अडॉप्ट अ क्रिटिकल वे ऑफ थिंकिंग. इसके साथ ही हार्ड वर्किंग एंड फोकस भी होना चाहिए. According to the explanation, option C will be the correct for this question. So researcher should be open-minded. The researcher aim at immediate application. In given question, they asked you which research is applicable when the researcher aim at immediate application, and the options are action research. Action research is philosophy and methodology of research generally applied in social science. It seeks transformative change through a simultaneous process of taking action and doing research which are linked together by critical reflection. Second option is empirical research. Empirical research is a research that is based on the observation and measurement of phenomena as directly experienced by the researcher. The third option is conceptual research. Conceptual research, as the name suggests, the research that related to abstract concept and idea. And the last option is fundamental research. Fundamental research is also called the basic research, is a type of a scientific research with the aim of improving scientific theory for a better understanding and prediction of nature or other phenomena. For this question, the correct answer will be option number A. The researcher aim at immediate application is action research. Which of the following are the characteristic of the seminar? ये जो क्वेश्चन है वो 2016 में पूछा गया था, जहां पर आपको कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा गया था सेमिनार के, और इसके लिए आपको ऑप्शंस दिए गए थे जिसमें कि फर्स्ट था इट इज अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन. सेकेंड वन इज it involves questioning, discussion and debates. Third one is it involves a large group of individuals. And the last one is it need involvement of a skilled person. और इसके लिए आपको कोड दिए गए थे जिसमें से आपको जो करेक्ट कोड है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना था. Generally, the seminars are geared more towards learning about a particular topic or a related subtopic. They might involve the guest speaker who are an expert in the relevant field. Okay, सेमिनार के लिए मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, हम किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं टू गिव द स्पीच. Okay, those attending the seminar typically are doing so in order to gather the information and gain the knowledge they did not otherwise possess. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1, 2 and 4 will be the correct here. It is a form of academic instruction will be the correct here. It is a characteristic of a seminar. Then is it involve the questioning, discussion and a debate. This is also the characteristic of the seminar, and it need involvement of skilled person. This is also correct here. Here is the question. The research stream of immediate application is. ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आया था, इन 2014 में पूछा गया था, और इसके लिए आपको ऑप्शंस भी दिए गए थे जिसमें कि फर्स्ट ऑप्शन था कंसेप्चुअल रिसर्च. Conceptual research is defined as a methodology wherein the research is conducted by observing and analyzing already presented information on a given topic. Okay, conceptual research does not involve conducting any practical experiment and it is related to the abstract concept and ideas. Conceptual research में कोई भी experimental practical experiment नहीं होता है, and ये जो होता है वो conduct किया जाता है by observing and analysis which is already presented information on the topic. Okay, second option is action research.
Research is a methodological approach to the money management, a course of finding a new information. Its essential point is to take care of prompt and emerged issue. It is a cyclical in nature. जो एक्शन रिसर्च होता है वो cyclical in nature होता है, and it is type of interactive research to concrete on a human action and a social practice within the corporation of the researcher. It is a applied research that is a central around a quick and immediate application, not to foster any hypothesis for a general application. Then is a fundamental research. Fundamental research is a research in which generally conducted to develop some new theories. The basic research is also called a fundamental research. Then is empirical research. Empirical जो research होता है वो base होता है on the observe and measure phenomena and derive a knowledge from the actual experience rather than from the theory or a belief. यहाँ पर जो correct answer आएगा वो होगा option number B, that is action research. A good thesis writing should involve. ये जो क्वेश्चन है वो 2015 में पूछा गया था, जहां पर आपको थीसिस के बारे में पूछा गया था, मतलब कि जब हम थीसिस लिखते हैं तब हम उसमें क्या इंक्लूड करते हैं, ओके, और क्या इन्वॉल्व होता है. उसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है रिडक्शन ऑफ अ पंक्चुएशन एंड अ ग्रामेटिकल एरर टू अ मिनिमम. सेकेंड वन इज केयरफुल चेकिंग ऑफ रेफरेंसेस. थर्ड वन इज consistency in the way the thesis is written, and the last one is a clear and well written abstract. और इसके लिए आपको कोड भी दिए गए थे जहाँ से आपको करेक्ट जो कोड है वो सिलेक्ट करना था. अगर हम बात करेंगे थीसिस और डिसर्टेशन, ये जो होता है वो डॉक्यूमेंट होता है सबमिटेड इन द सपोर्ट ऑफ अ for the academic degree or a professional qualification presenting the author research and a finding. Okay. यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज reduction of punctuation and a grammatical error to be minimum will be included here. Then is careful checking of references will be involved here. Then is consistency in the way of thesis is written is also involved here, and a clear and a well written abstract will be also included here. Okay, so all this will be the correct here. When academicians are called to deliver a lecture or a presentation to an audience on a certain topic or a set of a topic of a educational nature, it is called. मतलब कि किसी भी academician को बुलाया जाता है to deliver the lecture or a presentation to the audience on a certain topic और a set of a topic on a educational nature, इसे क्या कहा जाता है. ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था. ओके, उसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है ट्रेनिंग प्रोग्राम. ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है वो एक्टिविटी होती है which include the undertaking one or a series of courses to boost the performance, productivity, skill and knowledge. मतलब कि यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है किसी भी फ्रेशर को. ओके, सेकेंड ऑप्शन इज सेमिनार. A group of advanced students studying under the professor with each doing the original research or exchanging the result through the report and a discussion. It is like a meeting for giving and discussion information. Then is workshop, a place where the things are made, repaired, a class or a series of a class in which a small group of people learn the method and a skill used in doing something. Okay, and then is a symposium, an occasion at which a people who have a great knowledge on a particular subject meet in order to discuss the matter of the interest. Okay, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ सेमिनार. व्हेन द academicians are called to deliver the lecture or a presentation to an audience on a certain topic or a set of a topic of a educational nature, it is called a seminar. Male and a female student perform equally well in the numerical aptitude test. The statement indicate, ये जो क्वेश्चन है वो 2015 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, जहां पर आपको एक स्टेटमेंट दिया गया था और नीचे आपको ऑप्शंस भी दिए गए थे और आपको पूछा गया था दिस स्टेटमेंट इंडिकेट, और इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ फॉर्मल इंटेंटिव स्टेटमेंट ऑफ expected relationship between the two variables under the study. A hypothesis helps to translate the research problem and the objective.
in the prediction of expected result or a outcome of the research study. उसके बाद है null hypothesis. null hypothesis जो है वो एक प्रकार का hypothesis है जो कि यूज किया जाता है in the statistic that process that there is a no differences between the certain characteristic of the population. Okay, then is directional hypothesis. Directional hypothesis is a prediction made by the researcher regarding the positive and the negative change. ये जो है वो रिसर्चर का prediction है about the negative and the positive change or a relationship or a difference between the two variable of the population. This prediction is typically based on the past research or a expected theory, extensive experience or a literature on the topic. And the last option is statistical hypothesis. Statistical hypothesis generally specify the form of probability distribution or a value of a parameter of the distribution. A hypothesis that completely specifies the distribution is said to be a simple. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नल हाइपोथेसिस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नल हाइपोथेसिस वी आर सेइंग दैट देयर इज अ नो डिफरेंसेस. और यहाँ पर अगर हम स्टेटमेंट रीड करेंगे दैट इज मेल एंड अ फीमेल स्टूडेंट परफॉर्म इक्वली. ओके, मतलब कि जो दोनों है वो परफॉर्म इक्वल कर रहे हैं. सो यहाँ पर भी डिफरेंस नहीं है. सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नल हाइपोथेसिस. Which of the following steps are required to design a questionnaire? ये जो क्वेश्चन है वो 2015 में पूछा गया था, जहां पर आपको स्टेप्स पूछे गए थे जो कि रिक्वायर्ड होते हैं टू डिजाइन अ क्वेश्चनर. उसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है राइटिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एम ऑफ द स्टडी. सेकेंड इज रिव्यू ऑफ द करंट लिटरेचर. थर्ड वन इज preparing a draft of questionnaire and the last one is revision of the draft. और इसके लिए आपको कोड दिए गए थे जिसमें से आपको करेक्ट जो कोड है वो सिलेक्ट करना है. जो क्वेश्चनर होते हैं वो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट होता है दैट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर द पर्पस ऑफ गैदरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स थ्रू द सर्वे और अ स्टैटिस्टिकल स्टडी. जब भी हम कोई भी रिसर्च करते हैं तब हम क्वेश्चनर बनाते हैं सो दैट हम वो क्वेश्चनर सबको बांट देंगे और इंफॉर्मेशन जो होता है वो कलेक्ट कर देंगे फॉर द पर्पस ऑफ अवर रिसर्च स्टडी, राइट. A research questionnaire is typically a mixed close-ended question and an open-ended question. The open-ended long-term question offer the respondents the ability to elaborate the things. Okay. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर डी, that is all of the above 1 2 3 and 4. All this option will be included, that is writing primary and secondary aim of the study. अगर हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो उसका एम क्या होगा वो हमें पता होना चाहिए. सेकेंड इज रिव्यू ऑफ द करंट लिटरेचर. यस, वी हैव टू डू द रिव्यूज ऑफ द करंट लिटरेचर. देन इज प्रिपेयर द ड्राफ्ट क्वेश्चनर. यस, we can't make a direct final questionnaire, so before making a final questionnaire we have to prepare the draft questionnaire and then we have to do the revision of that draft. Okay, so option D will be the correct here. Which of the following statements is true in a context of testing of the hypothesis? ये जो क्वेश्चन है वो 2016 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था जहां पर आपको हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में पूछा गया था. और इसके लिए जो फर्स्ट है वो है इट इज ओनली द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड. सेकेंड इज इट इज ओनली नल हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड. थर्ड इज बोथ द अल्टरनेटिव and null hypothesis can be tested, and the last one is both the alternative and the null hypothesis cannot be tested. Hypothesis testing is basically the statistical procedure, and that is the researcher perform with the purpose of determining whether there is a chance of specific hypothesis to be a true. In a simple word, by using the statistical, you can test whether your prediction about a population is true or not. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी. It is the only null hypothesis that can be tested. It is a true in the context of testing of the hypothesis. Which of the following statement is not true in a context of participatory research? ये जो क्वेश्चन है वो 2016 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था जहां पर आपको पार्टिसिपेटरी रिसर्च के बारे में पूछा गया था. और इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है इट रिकॉग्नाइज द नॉलेज एज अ पावर. सेकेंड ऑप्शन इज it emphasizes on the people as an expert. Third option is
it is a collective process of inquiry, and the last option is its sole the purpose is production of knowledge. Participatory action research is a approach to the action research, emphatically participation and exchange by a member of a committee affected by that research. It seeks to understand the world by trying to change it collaboratively and following the reflection. Emphasis is collectively inquiry and experimentation grounded in the experience and social history. It recognize knowledge as a power, ये यहाँ पर true है. Second one is it emphasis on the people as an expert, ये भी यहाँ पर correct है. Third is it is a collective process of inquiry, ये भी correct statement है in case of the participatory research. But the last option, its sole purpose is a production of knowledge, ये यहाँ पर correct नहीं है. Okay, so the correct answer for this question will be option number D. Frequency distribution of a research data which is a symmetrical in shape similar to the normal distribution but central peak is much higher is. ये जो क्वेश्चन है वो 2014 में पूछा गया था जहां पर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा गया था. ओके, द फर्स्ट ऑप्शन हियर इज स्क्यू. When the normal curve slope to the left to the right, it is known as the skew distribution. Okay, ये जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह का होता है. Okay, like a bell shape. Then when we are talking about a normal distribution is look like this. A normal distribution is also known as a bell curve. It is most common frequency distribution. And this distribution is a symmetrical with the most value falling towards the central and a long tail to the left to the right, and it is a continuous distribution with no gap between the value. Then is mesocratic distribution that are moderated in the breadth and the curve with the medium peak high. Okay, then is a leptocratic. More value in the distribution tail are a more value close to the mean. And then is a platocratic. A fewer value in the tail and a fewer value close to the mean. And therefore the frequency distribution of a research data which is a symmetrical in a shape similar to the normal distribution but a central peak is a higher is a leptocratic. क्योंकि जो leptocratic का जो शेप होता है वो कुछ इस तरह का होता है, मतलब कि जो मिडल का साइज होता है ना वो थोड़ा इधर से वो हाई होता है. ओके, सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज leptocratic. Type 1 error occur if in a given question they ask you about a type 1 error, मतलब कि टाइप 1 एरर कब आती है. एंड द ऑप्शंस आर द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इवन दो इट इज ट्रू, द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड इवन दो इट इज फॉल्स, both the null hypothesis as well as the alternative hypothesis are rejected, and none of the above. Type 1 error occur if जो investigator है उसने अगर null hypothesis reject किया which is actually true in the population, और टाइप 2 जो एरर है वो if occur if the investigator failed to reject the null hypothesis that is actually false in the population. So for this question option A will be the correct. Type 1 error occur if the null hypothesis is rejected even though it is true. In doing research, what is a sequence of steps? And the options are reflect, observe, plan and act. Plan, act, observe and reflect. Plan, then reflect, observe and then act. Act, plan, reflect and observe. Here the correct answer for this question will be option number B. In doing research, the sequence is first we plan the research, how we going to do that research. Then we act according to our plan. Then we observe and last is the reflect. Here the question is the format of thesis writing is the same as in. ये जो क्वेश्चन है वो 2016 में पूछा गया था जहां पर आपको थीसिस के फॉर्मेट के बारे में पूछा गया था,
जिसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है प्रिपरेशन ऑफ द रिसर्च पेपर और आर्टिकल. सेकेंड ऑप्शन इज राइटिंग ऑफ सेमिनार प्रेजेंटेशन. थर्ड ऑप्शन इज a research dissertation, and the last option is presenting workshop or conference paper. A thesis or the dissertation is the document. ये जो है वो document है जो कि submit किया जाता है in the support of or an academic degree or a professional qualification presenting the author research and finding. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी. The format of thesis writing is the same as in a research dissertation. In qualitative research praedium, which of the following features may be considered critical? ये जो क्वेश्चन है वो 2016 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था और इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है डेटा कलेक्शन विथ स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च टूल्स. Data collection methods, tools and techniques should be highly standardized. Okay, जिससे हम डेटा जो है वो कलेक्ट करेंगे फॉर आवर रिसर्च, वो जो टूल्स हम यूज करेंगे वो स्टैंडर्डाइज होने चाहिए सो दैट डेटा रिलेवेंट टू अंडरटेक अ रिसर्च कैन बी इजीली realized and analyzed, and such an expectation cannot be simply materialized in applied and normative science. Second option is sampling design with probability sample techniques. If we see the probability sampling method, then there is a simple random sampling is there, systematic sampling is there, stratified sampling will be there, and a cluster sampling is also there. The third option is data collection with bottom-up empirical evidence. The data collection with the bottom-up empirical evidence is considered as a critical in this research. The aim of bottom studies in construct it is rather to give an accurate empirical distribution and explanation of interaction and problem solving strategies of actors involved in the policy delivery. And the last option is data gathering to take place with top down systematic evidence. इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, data collection with bottom-up empirical evidence. The next question here is the issue of research ethics may be considered pertinent at which stage of the research. ये जो क्वेश्चन है वो 2017 के क्वेश्चन पेपर में आया था जहां पर आपको रिसर्च एथिक्स के बारे में पूछा गया था. रिसर्च एथिक्स जो होते हैं वो फोकस करते हैं ऑन द मोरल प्रिंसिपल दैट रिसर्चर मस्ट फॉलो इन द रिस्पेक्टिव फील्ड ऑफ रिसर्च. द एथिकल डिसीजन मेकिंग इन एकेडमिक रिसर्च फोकस ऑन प्रोवाइडिंग द मैक्सिमम बेनिफिट टू द पार्टिसिपेंट. इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है एट द स्टेज ऑफ प्रॉब्लम फॉर्मेशन एंड इट्स डेफिनेशन. सेकेंड ऑप्शन इज एट द स्टेज ऑफ finding the population of research. Third option is at the stage of data collection and interpretation. And the last option is at the stage of reporting and finding. Research is a multi-stage process. Okay, and the ethics are central to the research process, and the researcher need to take care of the various ethical issues at a different level of this process. There are many ethical issues to be taken into the serious consideration for a research. For example, securing the actual permission and the interest of all the involved in the study. There should not be a misuse of any information discovered, and there should be a certain moral responsibility maintained towards the participant. There is a duty to protect the right of a people in the study as well as a privacy and a sensitivity. Beside this, the highest level of ethical standards is maintained at the stage of data collection and interpretation. Then is the data must be through real, free from the assumption. Then is analysis must be done in a systematic manner and within the strict predefined parameter, and there should not be any scope of bias or a prejudice. The standard must be unquestionable. It should be free from a bias and a prejudice.
The entire result of a research depend upon the lot of the authenticity of the data. जो भी डेटा हम कलेक्ट करेंगे वो फॉल नहीं होना चाहिए, वो ट्रू होना चाहिए। और हमें जो डेटा कलेक्ट करते हैं हम, तब जो पार्टिसिपेंट होता है, जो क्वेश्चनर फिल करता है, उसकी जो प्राइवेसी होती है, उसकी जो सेंसिटिविटी होती है, वो भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, so the correct answer for this question will be option number C, that is at the stage of data collection and interpretation will be the correct answer here. Which of the following is a susceptible to the issue of research ethics? ये जो क्वेश्चन है वो 2017 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, और इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है inadequate application of statistical techniques. Second option is faulty research design. Third option is choice of sampling techniques, and the last option is reporting of research finding. Here the correct answer for this question will be option number D, that is reporting of research finding. The reporting of research finding is susceptible to the issue of research ethics because all the result of research is based on the reporting of the research finding. It includes the introduction of research, the objective and how the achievement methodology and the main finding. The review any previous work to do within the topic of a research and general discussion and how it related to research, that is support, content, prove and disprove. All things will be in the reporting of research and finding. A variable that measures the effect of manipulated variable is known as. ये जो क्वेश्चन है वो 2018 के क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया था, जहां पर आपको वेरिएबल्स के बारे में पूछा गया था। ओके, इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड इज नोन एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, इन अ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, a relation between the cause and the effect of the situation is studied, and it is a causal research where the one observes the impact caused by independent variable on the dependent variable. Second option is dependent variable. A dependent variable is a variable being tested in the scientific experiment. The dependent variable is dependent on an independent variable. Then is confounding variable. Confounding variable is unmeasured third variable that influence or confound the relationship between the independent and the dependent variable by suggesting the presence of the specious correlation. And due to the presence of confounding variable in the research, we should never assume that correlation between the two variables implies the causation. Okay, and the last option is control variable. Control variable is commonly used the term in the field of scientific research where the finding evidence to the support theory is rarely straightforward. In case of a natural science, some research features are constant, but the majority of these have a inconsistency, and this inconsistency is known as the variables. So for this question, the correct answer will be option number B, that is dependent variable. The act of publishing the same data and result in more than one journal or a publication refer to which of the following professional issue? जब कोई रिसर्चर एक ही मटेरियल को और एक ही रिसर्च को एक और दो बार पब्लिश करता है, तब किस टाइप का इशू होता है और किस टाइप का प्रोफेशनल इशू क्रिएट होता है? एंड द ऑप्शंस आर partial publication. Partial publication means dividing the report of a research project into the multiple article. Then is duplicate publication. Duplicate publication or a multiple publication, जब रिसर्चर सेम वर्क और सेम मटेरियल को एक से ज्यादा बार पब्लिश करता है, that time we say that it is duplicate publication. And third option is full publication. Full publication means making the research work available to the everyone, means making the research publish. And last option is none of the above. Here the correct answer for this question will be option number B. The act of publishing the same data and the result
In a more than one journal or publication refer to duplicate publication professional issue. नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिगार्ड टू डिफरेंस बिटवीन द रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी। मतलब कि यहाँ पर आपको डिफरेंस पूछा गया है और नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से आपको करेक्ट जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करने हैं विद रिगार्ड टू द रेफरेंस एंड द बिब्लियोग्राफी। उसके लिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है वो है रेफरेंस इम्प्लाई ओनली द text citation and have a use in the project, whereas bibliography refer to the in-text citation and other resources that are used to generate the idea. Second statement है the paper cannot have a both references list and a bibliography. Third option is references used in the assignment can be arranged only the numerical. On the contrary, the list of the source used in the bibliography is a use organize the अल्फाबेटिकल। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है द रेफरेंसेस कैन बी यूज्ड टू सपोर्ट एन आर्ग्यूमेंट एज अगेंस्ट द बिब्लियोग्राफी इज नॉट यूज्ड फॉर अ सपोर्टिंग एंड द आर्ग्यूमेंट। और इसके लिए आपको कोड दिए गए हैं जिसमें से आपको जो करेक्ट कोड है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रेफरेंसेस की, इन रिसर्च मेथोडोलॉजी इट डिनोट द items like a books, research papers or an article or from magazines, journals, newspaper which have a review and refer to in the text in your research work. Okay, यहाँ पर जो researcher होता है वो कुछ books refer करेगा, okay? कुछ जर्नल्स रिफर करेगा, न्यूज़पेपर रिफर्स करेगा और ये जो सब है वो अपने रिसर्च पेपर में मेंशन भी करेगा। ओके, इट्स अ नथिंग बट वे ऑफ एक्नॉलेजमेंट। ओके, ये जो होती है वो वे ऑफ एक्नॉलेजमेंट होती है। ओके, और इनडायरेक्टली शोइंग द ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द सोर्स फ्रॉम वेयर द इंफॉर्मेशन इज द गैदर। मतलब कि जो रिसर्चर है उसने कहाँ से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, कौन से सोर्स वो यूज कर रहा है, वो यहाँ पर वो मेंशन करेगा। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडिंग द रेफरेंसेस एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट इज टू सपोर्ट एन idea or a argument. To what? To support. Okay, you have to remember this. The citation style that use references list include the APA citation, then is the AMA citation for the references, okay, and MLA citation that we use for the references. और अगर हम बात करें बिब्लियोग्राफी की, it represent a list of all the sources like a books, magazine, journals, website or a other publication, irrespective the work citation are not which are in the same way relevant to the topic under the study that has been consulted to the researcher during the research. It is a helpful to reader in gaining the information regarding the literature available on the topic, what influenced the author. Okay, and Chicago citation and Oxford citation are two citation style that is a use in the bibliography. Okay, और जो bibliography होती है ना वो end of the research paper में वहाँ पर लिखी जाती है। So according to the explanation, यहाँ पर जो correct answer होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये जो है references imply only the in-text citation that have been used in the project, whereas the bibliography refer to in-text citation that other sources are used to generate the idea, ये जो है वो correct है। And statement 4, a references can be used to support an argument as against the bibliography is not used for supporting an argument, ये भी यहाँ पर correct है। Question is, which of the following statement is or are truth regarding the characteristic of the research? So इस क्वेश्चन में आपको कैरेक्टरिस्टिक पूछे गए हैं रिसर्च के। So that to answer this question you have to know about the characteristic first. Okay, so the research is a preliminary concern with the production of a knowledge and it is a process of discovering the unknown and rediscovering the known things. For this, the characteristic will be, the first one will be empirical,
The research is based on the direct experience or a observation by the researcher. जो रिसर्च जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है रिसर्चर का. उसके बाद है लॉजिकल. रिसर्चेस आर बेस्ड ऑन द वैलिड प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल. क्योंकि यहाँ पर जो रिसर्चर होता है वो रिसर्च करता है और जो उसका रिसर्च होता है वो वैलिड प्रोसीजर पर बेस्ड होता है. उसके बाद है साइक्लिकल. रिसर्च स्टार्ट विद द प्रॉब्लम एंड एंड विद द प्रॉब्लम. उसके बाद है एनालिटिकल. एनालाइज करता है रिसर्चर. Researcher utilize the proven analytical procedure in gathering the data where the historical, descriptive, experimental and a case study. उसके बाद है critical. Research exhibit carefully and precise the judgment. उसके बाद है methodical. Research is conducted in the methodical manner without a bias using a systematic method and a procedure. उसके बाद है replicability. Research design and procedure are repeated to enable the researcher to arrive at the valid and conclusive result. Research is a purposive. Okay? जब भी कोई रिसर्चर रिसर्च करता है उसके पीछे उसका कुछ तो पर्पस होता है. So it is a purposive and research is a intellectual activity. So here I have explained you all the characteristic, right? और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं अब हम उनको देखेंगे. तो उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है रिसर्चर इज बेस्ड ऑन द लॉजिकल रीजनिंग. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर वो कह रहा है कि रिसर्च जो होता है वो बेस्ड होता है ऑन द लॉजिकल रीजनिंग. सो ये क्या होगा, यहाँ पर वो करेक्ट होगा, राइट? Then is research is create a path for generating a new question. ये भी यहाँ पर करेक्ट होगा. उसके बाद है research is not a purposive. But अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, तो हमने देखा था कि रिसर्च जो होता है वो पर्पसिव होता है, राइट? सो जो थर्ड पॉइंट है वो यहाँ पर करेक्ट नहीं है. उसके बाद है रिसर्च रिक्वायर अ डिग्री ऑफ एक्सपर्टाइट एंड स्किल. यस, ये भी यहाँ पर करेक्ट होगा. अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमारे पास वो डिग्री होनी चाहिए. और लास्ट वन है रिसर्च इज नॉट अ साइक्लिकल इन नेचर. और मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि रिसर्च जो होता है वो साइक्लिकल होता है इन नेचर में. सो यहाँ पर ऑप्शन 1, 2 एंड 4 जो है वो यहाँ पर जो होंगे वो करेक्ट होंगे, राइट? मतलब कि ऑप्शन 3 जो है वो यहाँ पर करेक्ट है. ओके. The next question here is, before constructing question, one must be acknowledgeable about each type of a question used in the survey research, because the question are the primarily tool in collecting the necessary information from the respondents of the survey and accordingly identify which among the following are correctly matched. यहाँ पर आपको कहा गया है कि जो रिसर्चर होता है उसे पहले ही जो कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन वो सर्वे में यूज करने वाला है उसे डिसाइड करने होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्राइमरीली टूल होते हैं व्हाइल कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट्स. एंड आपको यहाँ पर कहा गया है कि अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई करो कि विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच. ओके. और उसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है वो है open-ended question, and these are the questions that are not having a predefined options or a categorized include. Okay. उसके बाद है leading questions. These are the questions that suggest or influence the answers to the respondents. Third option is close-ended questions and last option is all of the above. Okay. सो यहाँ पर अगर हम बात करें ओपन एंडेड क्वेश्चंस की, इन ओपन एंडेड क्वेश्चंस देयर आर नो प्रीडिफाइंड ऑप्शंस और कैटेगरीज इंक्लूडेड. द पार्टिसिपेंट शुड सप्लाई देयर ओन आंसर. ओके. यहाँ पर जो है ओपन एंडेड में यहाँ पर हम ऑप्शंस नहीं देते हैं. यहाँ पर जो रिस्पॉन्डेंस होता है वो फ्री होता है कोई भी आंसर्स देने के लिए by his own. Okay. And some of the example of open-ended questions are completely unstructured questions. Okay. Word associations questions can be again the options of the example of the open-ended questions, and a sentence, story or a picture completion. उसके बाद अगर हम बात करें leading questions की, तो leading questions is a one that suggests the answer to the respondents. The questions itself will be influence the answer. The respondents have a tendency to respond the
positively. For example, how do we like the program or a radio Mirchi? The answer is like to be a yes. Unbiased way, it's your favorite FM station. That answer will be any one of the four stations, namely the Radio City, Mirchi, then is a Rainbow or a Radio One. Okay, this is the example of the leading questions. Then is a close-ended question. The close-ended question is a limit the answers to the respondents to the options provided on the questionnaire. Here what we are doing, we are giving the options to the questions, and from that options the respondents have to select the one. Okay, the example of this is a multiple choice questions. अगर हम बात करें multiple choice question की, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम respondents को कुछ options देते हैं और उसमें से ही उसे वो select करना होता है. Okay, or a skill questions. There are making the use of the rating scale such as the Likert scale. Okay, यहाँ पर scaling का भी एक options दिया गया होता है या close-ended questions में, and the last option is all of the above. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, that is all of the above. That is open-ended questions, leading questions and close-ended questions will be the correct answer here. The next question here is, which of the following is are correct regarding द कंसेप्ट ऑफ रिसर्च डिजाइन. तो इस क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट ऑफ रिसर्च डिजाइन पूछा गया है. रिसर्च डिजाइन का कंसेप्ट पूछा गया है बेसिकली. ओके, और इसके लिए जो फर्स्ट वन है वो है व्हेन अ ग्रुप इज एक्सपोज टू यूजुअल कंडीशन इट इज टर्म एज कंट्रोल ग्रुप. उसके बाद है when the dependent variable is not free from the influence of external variable, then the relation between the dependent variable and the independent variable is said to be a confounded relationship. Third is independent variable that are not related to the purpose of the study but may affect the dependent variable are termed as experimental group. And the last one is the independent variable are also called the treatment. और यहाँ पर आपको कोड दिए गए हैं जिसमें से आपको जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है. तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सटर्नल वेरिएबल की, तो although the dependent variable are unrelated to the study purpose, they might however affect the dependent variable. Okay, and this is known as a external variable. उसके बाद है ट्रीटमेंट. अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, okay, this can be defined as a different types of a condition under which the experiment and a control group are put. Okay, उसके बाद है experimental group. It is a group that receive the variable being tested in the experiment. Then is a control group. What is a control group? Control group is the an experiment that does not receive the variable are being tested. Okay, उसके बाद है confounded relationship. In case of a dependent variable is bound by the influence of a external variable, the relationship between the dependent and the independent variable is known as a confused by the external variable, that is called a confounded relationship. Okay, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, that is 1, 2 and 4 will be included here. The next question here is, which of the following below are the key characteristic of the research design? यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा गया है रिसर्च डिजाइन के, जिसके लिए आपको जो फर्स्ट वन है वो है न्यूट्रलिटी, देन इज रिलायबिलिटी, देन इज वैलिडिटी, देन इज जनरलाइजेशन, देन इज ऑब्जर्वेशनल, देन इज स्टैटिस्टिक. और इसके लिए आपको कोड दिए गए हैं जिसमें से आपको जो करेक्ट कोड है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है. अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिसर्च डिजाइन, देन द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अंडर द रिसर्च डिजाइन विल बी न्यूट्रलिटी. ओके, when you set up your study you may have make a assumption about the data you expect to collect, right? जब भी हम कोई भी स्टडी करते हैं तब हम कुछ assumptions लगा लेते हैं, right? The result projected in the research design should be free from the bias and the neutral.
जब भी कोई रिसर्चर रिसर्च करेगा तो वो जो रिसर्च होगा वो फ्री होगा फ्रॉम द बायस and neutral. Okay, then is the reliability is the second characteristic under the research design. When we are talking about a reliability, it regularly conduct research. A researcher involve the expert similar result every time. Your design should indicate how from the research question to ensure the standard result. You only be able to reach the expected result if your design is reliable. Okay, then is a validity. Validity is again the characteristic under the research design. There is a multiple measuring tools available. However, only the correct measuring tool are those which help the researcher in achieving the result according to the objective of the research. And the questionnaires developed from this design that will be then valid. Okay. Then is a generalization is again the characteristic under the research design. The outcome of your design should apply to the population and not to the restricted sample. A generalized design implies that your survey can be conducted on any part of the population with the similar accuracy. Okay, मतलब कि जब भी हम रिसर्च कर रहेंगे उसमें accuracy होनी चाहिए. Okay, और जो हम पॉपुलेशन सिलेक्ट करते हैं वो जो होता है वो सिलेक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड एरिया से नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4. दैट इज A, B, C and D will be included here. That means the neutrality, reliability, validity and generalization will be the included here. The next question here is which of the following act refer to the manipulating research material or changing or omitting data or result such that the research cannot accurately represented in the research record. Okay, उसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है फैब्रिकेशन, उसके बाद है फॉल्सिफिकेशन, देन इज प्लेगरिज्म एंड लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव. अगर हम बात करें रिसर्च मिसकंडक्ट की, ओके यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि मिसकंडक्ट की. फैब्रिकेशन, making up a data or a result and recording or a reporting that. Okay, then is a falsification. What is a falsification? Manipulating the research material. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम manipulate कर रहे हैं. Okay, manipulating, please remember this. Or changing or omitting the data or a result such that the researcher is not accurately represent the in the research record. Okay, उसके बाद है प्लेगरिज्म. व्हाट इज अ प्लेगरिज्म? मतलब कि किसी और के रिसर्च वर्क को अपने रिसर्च में कॉपी करना. ओके, कॉपी पेस्टिंग विदाउट इन्फॉर्मिंग द पर्सन. ओके, वी आर स्टीलिंग समवन एल्स मटेरियल. And the research misconduct does not include the honest error or a difference of the opinion. The correct answer for this question will be option number 2, that is falsification. The next question here is which of the following are related to non-probability sampling technique. इस क्वेश्चन में आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से आपको बताना है कि कौन से जो है वो रिलेट करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स को. उसके लिए फर्स्ट है क्लस्टर सैम्पलिंग, उसके बाद है शॉपिंग मॉल इंटरसेप्ट सैम्पलिंग, उसके बाद है कोटा सैम्पलिंग, देन इज स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड लास्ट वन इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. और उसके लिए आपको कोड दिए गए हैं जिसमें से आपको जो करेक्ट कोड है वो यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं. अगर हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, तो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है वहां पर जो एवरी यूनिट होता है पॉपुलेशन का एज अ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड. ओके, सबके पास जो है वो इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का. ओके, और अगर हम बात करें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग द यूनिट इन द पॉपुलेशन हैव अ अनइक्वल चांस. ओके, ये जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है. ओके, ऑलमोस्ट नो चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड एज अ सैंपल यूनिट, ये जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है. तो यहाँ पर मैंने आपको
प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से सैम्पलिंग इंक्लूड होते हैं वो दिए हैं। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग की, तो उसमें जो है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आएगा, उसके बाद सिस्टमेटिक सैम्पलिंग आएगा, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आएगा, क्लस्टर सैम्पलिंग विल बी इंक्लूडेड, देन इज एरिया सैम्पलिंग विल बी इंक्लूडेड, मल्टीपल स्टेज सैम्पलिंग विल बी इंक्लूडेड अंडर द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। एंड अगर हम बात करें नॉन प्रोबेबिलिटी और नॉन रैंडम की, तो उसमें जजमेंट सैम्पलिंग आएगा, कन्वीनियंस सैम्पलिंग आएगा, कोटा सैम्पलिंग आएगा, पैनल सैम्पलिंग आएगा एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग आएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 2, 3 and 4 will be included here. 2, 3 and 4. Shopping mall or intercept sampling will be included. Quota sampling will be included, and snowball sampling also included in non-probability sampling techniques. The next question here is the market research is conducted on ready-to-eat food at two different points of time, that is T1 and T2 with gap of the 4 months. Which among the following research study is used by the researcher? उसके जो लिए फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है longitudinal study. अगर हम बात करें longitudinal study की, so there are study in which the event or a occurrence is a measured again and again over a period of time. Okay. Over a period of time. And this is known as a time series study. जो longitudinal study होती है उसे हम time series study भी कहते हैं. Please remember this. Through this, the researcher come to know how the market change over a time. उसके बाद जो second option है वो है cross section study. In a cross-section study, you collect the data from the population at a specific point in a time. In other words, defining the features of a cross-sectional study is that compare the different population group at a single point of time. यहाँ पर जो researcher है वो compare करता है different population group को at a single point of time. Okay. उसके बाद है descriptive study. Descriptive research is defined as a research method. Okay. ये जो है वो research method है. That describe the characteristic of the population. अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन तो उसके अंदर आएगा लाइक जेंडर, एज, बैकग्राउंड, इनकम, ऑक्यूपेशन, education, household size, religion, generation, nationality, and even the social class will be included under the characteristic of the population or a phenomenon that being a study. And this methodology focus more on what of the research subject rather than why of the research subject. And the last option is any of the above. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी, जिसे हम टाइम सीरीज स्टडी भी कहते हैं. ओके, इट इज बेस्ड ऑन द टाइम.